Hello everyone, welcome to our channel. Today we'll discuss about various types of guidance program and how these guidance programs is normally executed at the various level of schooling. You'll find the various types of guidance programs at the various level and what are these various types and areas of guidance program and why we are using the guidance program and how many types of guidance program are there. So let's start. The student's life is getting complex day by day. Nowadays, the student's life is very complex because in the 21st centuries, the students are facing abnormal and difficult situations. Difficult situations, particularly into make a wise choice in curricular and the co-curricular choices. That means it is very difficult to take decisions on what needs to be taken up and what should not be taken up in the co-curricular activities and also in curricular activities in deciding your core subject, elective subjects and other allied areas, whereas in the co-curricular activities to demonstrate your personalities, to showcase your interests, attitudes in the form of dancing, singing, sports, etc. So students are making always in a dilemma to decide what curricular and co-curricular activities to be taken up. And why? Because to acquire some basic skills for optimum achievement, adjustments with the peer, so that even they take a wrong choice, so they feel that it will hamper their study skill for the achievements and the adjustment with the peers, because at this stage the peer pressure and the peer plays a very important roles to modulate the personalities and to showcase the achievements. In its beginning, guidance program was concentrate only on the problem solving related to vocational program. And later on, it was not only confined to vocational programs, because earlier days, peoples are more focusing on the employment opportunity. They are facing the problems related to their jobs, particularly for the young people. But now the guidance program has been gone beyond this, and it is now concentrate on the entire individual in all aspects. ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଟୋଟାଲିଟି ଆଣ୍ଡ ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଗାଇଡେନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କହୁଛି। ତ ତେଣୁ ଏହି ସମସାମୟିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ କିମ୍ବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ସିଚୁଏସନ୍ସ ଥ୍ରୁରୁ ପାସ୍ ଅନ୍ କରୁଛନ୍ତି ୱିଥ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ କରିକୁଲାର ଆଣ୍ଡ କୋକରିକୁଲାର ଏରିଆରେ ତାର ସବଜେକ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା କୋକରିକୁଲାର ଏରିଆକୁ ତାଙ୍କର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପିଅରମାନଙ୍କ ସହିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ କି ଗାଇଡେନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର 21st ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ତାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରହିଛି ବା ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ତ ଆଗରୁ କ'ଣ ଥିଲା, वी आर मोर फोकसिंग ऑन द भोकेशनल गाइडेंस, मोस्टली जॉब रिलेटेड भोकेशनल गाइडेंस को मेजर फोकस करा जाउतला, काहेकि ना मेजरली जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पाई गोटे मेजर प्रॉब्लम क्रिएट होतला इन द अर्लियर स्टेज ऑफ दिस 18 इन योर 20th centuries। बट वर्तमान कौन हो गाइडेंस प्रोग्राम्स नॉट ओनली कन्फाइंड टू भोकेशनल बट ऑल्सो द एंटायर स्पीयर एंटायर individual personalities, so that it includes the educations, vocation, the personal life and many areas. So broadly the areas are very vast, but in your syllabus there are 3 types of guidance program, morely focusing on the personal and social guidance, that we are talking about the personal guidance, educational guidance and the vocational guidance, and also somehow the social guidance. So there are broadly we'll discuss about the personal guidance, vocational guidance and your educational guidance. So let's start with the personal guidance. Students face many problems and many challenges with respect to their parents, the family, friends and the teachers. Why? Because they very often memories related to the home and the family which create the feeling of disappointment in them.
जदि गोटे मनीष गोटे स्टूडेंट्स लाइफ रे फैमिली पेरेंट्स फ्रेंड्स एंड टीचर रो बहुत इंपोर्टेंस रही। तो पर्सनल लाइफ रे मान सहित जेहेतु गोटे संपर्क सहित जड़ित होता है गोटे विद्यार्थी आ तार यही जो परिवार सहित तार फ्रेंड सांगसाथी मान सहित बहुत गुड़े मेमोरी से कल्टिवेट करें, बहुत गुड़े गुड मुवमेंट से शेयर करें। तो से गुड़ाक कौन हुए डिसअपॉइंटमेंट सृष्टि करे कौन इफ देयर पेरेंट्स आर एक्सपेक्टिंग इज टू मच फ्रॉम देम एंड इट लीव्स देम फॉर फीलिंग अप इनकम्पिटेंस एंड द इनसिक्योर लीडिंग टू पुअर सेल्फ कॉन्सेप्ट। जदि पितामाता जो एक्सपेक्टेशन अच्छी टू हाई अच्छी जदि बेसी उच्चाभिलाषी अच्छा पितामाता बा पेरेंट्स बट स्टूडेंटा से एक्सपेक्टेड रिजल्ट से पूरण कर पारुना पितामाता आकांक्षा आशा आकांक्षा को जदि पूरण कर पारुना तो कौन हे तार स्टूडेंट्स भितर गोटे इनकम्पिटेंस एवं इनसिक्यूरिटी तार भितर देखादेव जहाँफल कौन हम सेल्फ कॉन्सेप्ट सेल्फ एस्टीम्स रे आत्मसम्मान एवं आत्मसमीक्षार जोटा आत्म जो स्व बोली कि अच्छी आत्मसम्मानटा अच्छी बा स्वाभिमानटा अच्छी ताहार गोटे गोटे बहुत प्रश्नवाची सृष्टि होता है एवं जहाँफल कौन हम पर्सनल गाइडेंसटा बहुत फोकस कर जहाँकि स्टूडेंट्स फिजिकल इमोशनल सोशल रूरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को फोकस कर कहीं समहाउ और समवेयर द टोटालिटी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को फोकस करते पर्सनल गाइडेंस कहीं तार बहुत गुड़े ऑब्जेक्टिव अच्छी टू असिस्ट द इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग हिमसेल्फ एंड हरसेल्फ निजे को निजे बुझापी पर्सनल गाइडेंस बहुत जरूरी रही तार उद्देश्य। सेकेंड टू असिस्ट द इंडिविजुअल इनवॉल्विंग पर्सनल प्रॉब्लम को सॉल्व करिवार होची तार गोटे आ गोटे उद्देश्य। थर्ड होची टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन जजमेंट स्वतंत्र भाव में डिसीजन्स नेबा कि जजमेंट नेबा प्रॉब्लम को सॉल्व करवा तार होची पर्सनल गाइडेंस आ गोटे मुख्य उद्देश्य। ता सहित इंडिविजुअल्स टू व्यू द वर्ल्ड एंड द सोशल एनवायरनमेंट इन राइट पर्सपेक्टिव गोटे सुदर्शन बा टोटल समसामयिक समाज को बा दुनिया को गोटे राइट पर्सपेक्टिव रे देखापी गोटे गुड व्यूज रे देखापी साहाय्य करवा इंडिविजुअल्स को होची पर्सनल गाइडेंस रो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आल्सो। अपार्ट फ्रॉम दैट social adjustment and the sound adjustment means reacting to the environment according to the situations or reacting or response according to the environment and accommodating yourself according to the need and requirement and changing dynamic of the environment जोटा कि different social political environment रे बा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एटमोस्फियर रे केमती निज को निज सहित खाप खुआई चलवा होची पर्सनल एडजस्टमेंट गोटे पर्सनल गाइडेंस गोटे मुख्य उद्देश्य। सो पर्सनल गाइडेंस इज एसेंशियल एट ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ मनीष जीवन रे बस विद्यार्थी लाइफ कहतु कि मनीष गोटे लोक पाखे इज इन एवरी स्टेजेस ऑफ लाइफ रे पर्सनल गाइडेंस रो बहुल मात्रा दरकार अच्छे कहीं से गुड़ा को पर्सनल लाइफ रे से इंटीग्रेट करने को पड़ी था। जदि आम स्कूल वाइज देखा एट द एलिमेंटरी स्कूल स्टेज रे शुड बी गिवन टू द स्टूडेंट द सेल्फ एक्सप्रेशन निजको निजर परिप्रकाश करवा होची गोटे पर्सनल गाइडेंस मुख्य उद्देश्य। एट द बिगिनिंग ऑफ द स्कूलिंग सिस्टम्स एलिमेंटरी स्टेज क्लास 1 ରୁ 8 पर्यंत स्टूडेंट्सटा जिते अच्छी निजको निजे केमती एक्सप्रेस करिवो सेटा होची गाइडेंस प्रोग्राम गोटे मुख्य उद्देश्य बिकॉज द साइकोसोशियल प्रेशर एंड ऑल्सो द फोबिया साइकोलॉजिकल फियर स्टूडेंट्स पाखे थाए जहाँफल कि निजर व्यक्तित्व परिप्रकाश करें गोटे स्टूडेंट्स गोटे तेणु गाइडेंस प्रोग्राम हेल्प करिवो पर्सनल गाइडेंस हेल्प करिवो एलिमेंटरी स्टेज रे पिला को केमती निजर निजको आत्मर परिप्रकाश करिवो निजर पर्सनालिटी को परिप्रकाश करिवो एवं गाइडेंस प्रोग्राम एट दिस स्टेज डील्स विथ द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी सोशल एक्सेप्टेंस एंड द डिसिप्लिन्स। आमे जदि देखिबा द वेरियस स्टेजेस ऑफ द इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट देखा जदि पिलाकर एक्सेप्टेबिलिटी रोनी इनसिक्योरिटी रोचे स्टूडेंट्स लाइफ रे तो सेटा गोटे गोटे मेजर प्रॉब्लम रही है। तो वेरियस टाइप ऑफ जो मेंटल हेल्थ एंड एडजस्टमेंट प्रॉब्लम रोची इन द एट द वेरी बिगिनिंग तो से जगह
सेंस ऑफ लोनलीनेस एंड द इनसिक्यूरिटी रही है, सोशल एक्सेप्टेंस रही है एवं डिसिप्लिन्स रे जदि जो प्रकार प्रोब्लेम फेस करी थाए ताको रिजल्व करने फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द चाइल्ड जहाँफल कि स्टूडेंट्स को हेल्प करिवो। तो आपण मैंने जब देखिथे तारे जमीन पर जो गोटे जो बालकटी थिला तार गोटे बहुत फिलियस इनसिक्यूरिटी ड्यू टू दिस डिस्लेक्सियास, नो डाउट द स्पेशल नीड चिल्ड्रेन थिला, बट feeling of insecurities, social acceptance and discipline was very poor because the parental care was not there. Excessive mental pressure was there due to their incapacity or inability to showcase his achievement in the classroom. तो पर्सनल गाइडेंसटा से हेल्प करिवो। सो एट द सेकेंडरी स्टेज लेटर ऑन द स्टूडेंट्स हैव द मोर इंटरेक्टिव पर्सनल प्रोब्लेम और इंट्रिकेट माने होची बहुत इंटेंसिव पर्सनल प्रोब्लेमटा बहुत देखा जाता है बिकॉज एट द सेकेंडरी स्टेज द स्टूडेंट्स आर एट द एडोलेसेंट स्टेज जहाँ फल कौन हम ड्यू टू वेरियस पिकुलियर फिजिकल प्रोब्लेम्स इमोशनल एंड द सोशल डेवलपमेंट अंडरगो नोटिसेबल चेंजेस इन देयर एटीट्यूड्स एंड द बिहेवियर जेहेतु एडोलेसेंट पीरियड रे थाए पिलाटा तो वेरियस साइकोसोशियल एंड फिजिकल चेंजेस आसी तार लाइफ रे जहाँ फल कौन हम चाइल्ड इज peculiar physical, emotional, and social development have undergone a considerable changes in this overall aspects of the overall personality of the child. As a result of which, there is a attitudinal and the behavioral problems, and attitudinal and behavioral disorders are there at this stage. So, personal guidance at this stage, at the secondary stage, should be focused on the personal and social adjustment. At the beginning, elementary stage रे आमे डिस्कशन करिछे अबाउट द सेल्फ एक्सप्रेशन, whereas at the secondary stage there should be more focus on the social and personal and the social adjustment को कहीं ना peer pressures, the attractions toward the opposite sex and so many things are happening at this stage, as a result of which the children is facing or a student is facing the personal and social adjustment problem. So personal guidance at the secondary stage will be more focusing on the personal and the social adjustment, whereas at the tertiary stage or the higher level it helps them to view the life in relation to the realities. At the later stage or at the graduation or +3 or we can say that the postgraduate stage they try to help them to establish their viewpoint with the realities. Daydreamer secondary stage the students are more become the daydreamer teenagers थांती किंतु समय वृद्धि सहित एक्सपीरियंस सहित रियलिटी सहित जिते एक्सपोजर हुए तांकर व्यू पॉइंट्स सहित एक्जिस्टिंग वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड सहित तांकर व्यू पॉइंट केते दूर पर्यंत मैच करुच्ची सेटा को मेजर फोकस एज द स्कोप ऑफ पर्सनल गाइडेंस एज दिस इज वेरी वाइडर जहाँ फल टर्सरी एजुकेशन स्टेजेस रे पर्सनल गाइडेंस इज वेरी वाइडर भास्ट स्टेजेस रे द फिलोसॉफिकल आइडियाज द फिलोसॉफिकल व्यू पॉइंट्स इज पर्सनल experience se jinsa guda has been predominated. So personal guidance is one of the more important area at not only in the beginning of the elementary stage but also secondary and the tertiary stage. So this is all about your personal guidance. Subsequently in the next classes we'll discuss about the educational guidance and also the vocational guidance. जदि भिडियोटी भल लगिला ताको लाइक करंतु, सांग मानक सहित शेयर करंतु एवं चैनल को जदि सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करूँ जहाँ फल कि आमर प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन आपण मानक पहुँची पार। थैंक यू।